जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? Okay, ji, I welcome you all in my video that is the lecture from APS Maya Road, and it's all about class 8 subject biology, and the chapter number is 4, that is cells and tissues. So the learning objective of this lesson is by the end of this lesson, students would be able, inshallah, to understand the concept of active transport and to understand the concept of various examples and its applications of active transport. So, G, let's start with the next topic. I mean, methods used for movement of molecules into and out of the cells. This was our ongoing topic in our classes these days. आप सबको अगर याद है मालूम है तो हम यही टॉपिक्स क्लास में पढ़ रहे थे and we have completed with diffusion, facilitated diffusion, osmosis, filtration, and this lecture is about active transport. So my today's topic is about active transport. So far, whatever we have learned is actually the movement of molecule across the cell membrane, but it is from the from higher concentration to lower concentration. Okay, just students, can you recall that diffusion, osmosis, facilitated diffusion, in all of these methods of movement, molecules are going to move from a higher concentration to lower concentration. ये बात याद है सबको? है ना, हम यही पढ़ते रहे हैं ना, हाई टू लो, हाई टू लो. अभी तक हमने इसके अलावा कोई बात नहीं की. But now, active transport is, let's go through its definition. Active transport is the movement of molecules across a cell membrane. Once again, we are concerned with the cell membrane and all of the movements हमने cell membrane के हवाले से देखनी है कि कौन सी चीज़ बाहर है वो अंदर कैसे जाएगी. So हमने cell membrane को दिमाग में रखना है. Okay, let's read the definition. Active transport is the movement of molecule across a cell membrane from a region of lower concentration to a region of higher concentration, that is against the concentration gradients. मतलब आपको समझ में आ गया, it is opposite to all of the movements we have done so far. So active transport is actually the movement of molecule from lower concentration. ये मैंने अलग से लिखा है ताकि आपको एक दफ़ा फिर दिमाग में बैठ जाए ये बात that it is different from rest of the movements of the molecule. It is from lower concentration to higher concentration, that it is the movement is from the molecules at the site at which the molecules of 20% and the movement has to go towards the 100% of the molecule, right? These are this 20%, 40, 60, 80, 100% is actually showing you the grades of concentration. हमने एक वर्ड यूज किया अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट्स. ठीक है, ये आपको शो कर रहा है डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. इसका मतलब कि 20% कॉन्सेंट्रेशन है, इसका मतलब कि 100% कॉन्सेंट्रेशन है. अब हमारी मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रही है? 20 से 100 की तरफ हो रही है. दैट इज फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन. Okay, so that was the first part of the definition, that the movement is from lower to higher. Okay, this is the next part of the definition, that active transport requires cellular energy ATP to achieve this movement. ठीक हो गया कि अब अगर आपने मूवमेंट अगेंस्ट द ग्रेविटी आई मीन अगेंस्ट द ग्रेडियंट करनी है तो ऑब्वियसली आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी. एंड एनर्जी किस फॉर्म में हमारे पास होती है सेल में एनर्जी सिर्फ और सिर्फ एटीपी की फॉर्म में होती है. एंड दिस इज द स्ट्रक्चर. आई एम गोइंग टू शो यू द स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी. दिस इज एटीपी, a molecule of ATP. It has three parts: adenine, ribose, and phosphates. And we are not concerned with the structure this time, just to show you, just to give you an idea what is an ATP molecule. It's an ATP molecule. और ये वाला जो P है, when this bond will break, it will release that much energy which is needed for this kind of movement, जिसको हम active transport कह रहे हैं. आपको याद है that ATP is formed by our mitochondria. I have discussed this in class. I mean, we have discussed this in class that mitochondria is the major energy center of a cell, है ना? ये बात हमने की हुई है ना. तो वो एनर्जी सेंटर जो है माइटोकॉन्ड्रिया, वो एनर्जी किस फॉर्म में बनाता है? वो एटीपी की फॉर्म में बनाता है. नाउ लेट्स रिवाइज द डेफिनेशन. इट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन to the higher concentration with the use of energy in the form of
ATP. So this is the definition of the active transport. नाउ टाइप्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो हमारे जो सेल में हम डिफरेंट एग्जांपल्स देखेंगे जहाँ एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज हो रही होगी. सो हियर वी हैव थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स in which we can see that this is the type of active transport: membrane pumps, endocytosis, and exocytosis. I will discuss these three examples with you in this topic, active transport. Now let's start with this diagram. This is the movement of molecule showing you from lower to higher concentration. Can you recall that structure? This is cell membrane. It has double lipid bilayer, double layers of the lipid. Can you recall that? One layer of lipid and this is the second layer of lipid. And these are some embedded proteins. Okay, this protein is basically a transport protein, but a different type of transport protein. It is called as carrier protein. This protein is called as carrier protein. Carrier protein utilizes energy for the movement of molecule. मैं repeat कर रही हूँ कि ये cell membrane है, cell membrane lipid bilayer है और इसमें active और इसमें ये transport protein है जिसका नाम है carrier protein. ये कैरियर प्रोटीन मूवमेंट्स करवा सकती है लोअर से हायर मूवमेंट मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन की तरफ. आप देख रहे हो यहाँ बहुत कम मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ बहुत ज़्यादा हैं. मीन्स दिस साइड इनसाइड ऑफ द सेल हैज़ low concentration and that side of a cell has higher concentration. Still, even in that case, this movement is from lower to higher and obviously by utilizing some energy. This is the beautiful depiction of the concept of it, I believe. Okay, let's see another diagram. This is a diagram showing in your book. Once again, lipid bilayer. Lipid bilayer, this is the carrier protein. Yellow colored protein is carrier protein. This part of the cell is inside of a cell, means this is cytoplasm, and that is the outside of a cell, that outside the cell, right? Extracellular, we can say that. Okay, this is the extracellular region, this is the intracellular region. Intracellular region means cytoplasm. तो ये हमने दोबारा से देखा कि ये प्रोटीन पंप है और सॉरी ये कैरियर पंप है, कैरियर प्रोटीन है. इसका के लिए एक वर्ड और भी यूज होता है, सोडियम पोटेशियम पंप. हम जो एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं वो है सोडियम पोटेशियम पंप. तो ये क्या है? ये एक सोडियम पोटेशियम पंप है. थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कि सोडियम पोटेशियम पंप क्या है. Now, active transport in this process, carrier proteins of cell membrane use energy to move the molecules against the concentration gradient. अभी जो मैंने आपको पहले फिगर दिखाई थी ऑरेंज कलर की, उसके अंदर कैरियर प्रोटीन्स जो दरमियान में लगी हुई थी और हमने ये भी देख लिया कि वो एनर्जी चाहती है मूवमेंट कराने के लिए फ्रॉम द अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द न्यूरॉन. न्यूरॉन क्या होता है? एक नर्व सेल होता है. हमारी पूरी बॉडी में हमने डिस्कस किया था ना कि नर्व सेल पूरी बॉडी में मैसेजेस पहुंचाता है, लंबे होते हैं ये सेल्स, राइट? सो दैट द मेम्ब्रेन ऑफ नर्व सेल्स हैव कैरियर प्रोटीन्स इन द फॉर्म ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप. तो हम कौन सी एग्जाम्पल लेने लगे हैं? मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ फिगर. पहले ये सपोज करते हैं कि ये जो मेम्ब्रेन हमने बनाई है लिपिड बायलेयर, ये जो लिपिड बायलेयर बनी हुई है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये किसकी है? न्यूरॉन सेल्स की है, राइट? दिस मेम्ब्रेन इज the cell membrane of a neuron that contains a very special type of carrier protein. That carrier protein is called as sodium potassium pump. That protein is called as sodium potassium pump. अच्छा, अब हम क्या करने लगे हैं? We are going to take an example of a neuron which is at rest. Means there is no nerve impulse traveling through it. ठीक है, इसमें से इस वक्त कोई मैसेज गुजर नहीं रहा. मैसेज का नाम होता है नर्व इम्पल्स. हम डिस्कस भी करेंगे लेटर. ओके, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ न्यूरॉन और अ सेल मेम्ब्रेन ऑफ अ न्यूरॉन और अ नर्व सेल. ठीक हो गया. और ये जो है न्यूरॉन, इसका हम कौन सा न्यूरॉन ले रहे हैं? विच इज एट रेस्ट. लेट्स गो थ्रू इट्स टेक्स्ट. In a resting nerve cell, I am telling you that we are taking an example of a neuron which is at rest. So in a resting nerve cell, not conducting nerve impulse, resting nerve cell कौन सा है? Which is not conducting a nerve impulse, जिसमें से कोई मैसेज भी पास नहीं हो रहा. This pumps spends energy ATP to maintain higher concentration of potassium and lower concentration of sodium inside the cell. Now, what is the duty of this pump? Whenever the
न्यूरॉन हैज़ टू बी एट रेस्ट, जब भी उसे रेस्ट पे होना है तो क्या करना पड़ता है, सेल को अपने इनसाइड पे पोटेशियम यानी कि साइटोप्लाज्म में पोटेशियम की अमाउंट हाई रखनी पड़ती है और सोडियम की लो रखनी पड़ती है। लेट्स सी वंस अगेन द डायग्राम। ये देखो आप, so in the inside of a cell there is high number of potassium, 1 2 3 4 5 5 molecules of potassium are showing inside the cell, and the figure is showing you 3 molecules of potassium on its outside. And sodium 1 2 3 4 are on inside, and 1 2 3 4 5 are on outside. हमने क्या कहा था कि whenever the neuron is at rest, it has to maintain a high concentration of potassium on its inside and a low concentration of sodium on its inside. Are you getting this? Okay. So what, so how will that cell will maintain this? अब वो कैसे maintain करेगा? With the help of this carrier protein. ये carrier protein क्या करेगी कि inside से sodiums को pick up करेगी और उन्हें push कर देगी to the outside. Although we know that sodiums are in low concentration on its inside and on its and are in higher concentration on its outside. आपने देखा ना, अंदर कम है बाहर ज्यादा. So sodiums will move from the lower concentration to the higher concentration, and potassium will move from its lower concentration to its higher concentration. By doing this, cell neuron will maintaining its resting state. Okay. Okay, so sodium will move, three sodium molecules will move from inside to the outside, and two potassium will move from outside to the inside to keep this neuron at rest. Okay, what are the conditions needed for a neuron to be at rest? A high concentration of potassium inside the cell and a high concentration of sodium outside the cell. Okay. Okay, आप इसको यूं भी कह सकते हो, high concentration of potassium inside and low concentration of sodium inside. इसको ऐसे भी कह सकते हो, high concentration of sodium outside and low concentration of potassium outside. ठीक है, आप दोनों साइड की concentrations को चेक कर सकते हो, outside को भी और inside को भी. Let's go through the text. ओके, फॉर दिस पर्पज से यहाँ मुराद है वो आपकी बुक का टेक्स्ट है ये सारा, दैट इफ सम न्यूरॉन वांट्स टू बी एट रेस्ट, सो द पंप एक्टिवली मूव्स से मुराद यूजिंग एनर्जी. द पंप एक्टिवली मूव सोडियम टू द आउटसाइड. हमने देखा था ना सोडियम को, वो 3 सोडियम्स को अंदर से बाहर भेज रहा था. एक्टिवली मूव्स सोडियम to the outside of the cell where they are already in higher concentration. Similarly, this pump moves potassium from outside to inside the cell where they are in higher concentration. Now let's revise the concept once again with this diagram. ओके, इसको थोड़ा सा करती हूँ, एनलार्ज करने की जरूरत नहीं है. ओके, लेट्स सी द डायग्राम वंस अगेन. दिस इज सेल मेम्ब्रेन, lipid bilayer. This is embedded protein, a carrier protein. It is also called as, if it is a neuron, so this carrier protein is called as sodium potassium pump. देखा हुआ यहाँ पे sodium potassium pump. The duty of this sodium potassium pump is to move 3 sodium outside the cell and 2 potassium to the inside of the cell by utilizing the energy. Why it is going to use the energy? Because this movement is against the concentration gradient, that is from lower concentration to higher concentration. Okay, what are the conditions needed for a cell to be at rest? Okay, the first condition, it has to maintain a high concentration of potassium inside the cell and a low concentration of sodium inside the cell. And the reverse can be higher sodium on its outside and lower potassium on its outside. I'm hoping that you will be with me. आपको सारा concept समझ आ गया होगा. But if you still have some queries, you can ask me at any time. I thank you all. अपना बहुत सारा ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज.